ninth standard, third chapter of maths one, that is algebra, that is polynomials. Today we will be learning about values of polynomials. Polynomials अभी तक आपने डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है, सिंथेटिक लीनियर मेथड से किया है. What is the value of polynomial? Value of polynomial is nothing but जब आप कोई वेरिएबल की जगह आप उसमें कोई इंटीजर या कोई भी एक नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हो तो उसका जो आंसर आता है वो आपका वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल. सपोज यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9. यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9. लेट p of x is equals to x square plus 8x plus 9. p of x is nothing but polynomial with variable x. So there is nothing to worry about this thing. p of x which बोल सकते हैं आप या polynomial with a variable x बोल सकते हो. अगर y का वेरिएबल रहा तो p of y लिखा जाता है. अगर z का वेरिएबल रहा तो p of z लिखा जाता है. अगर p का वेरिएबल रहा तो आप कोई भी लेटर ले लो, q ले सकते हो, q of x या r of p, सॉरी q of p या r of p. बिकॉज अगर कोई ऐसा इक्वेशन पॉलिनोमियल है p स्क्वायर माइनस 6 p स्क्वायर माइनस 6 p प्लस 18, सो इसमें आप ये नहीं लिख सकते कि p ऑफ p आएगा, बिकॉज ये दोनों कंफ्यूज हो जाएगा. तो इससे अच्छा आप दूसरा कोई वेरिएबल दे दो या दूसरा कोई नाम दे दो उसके लिए. सो p ऑफ x इज द जनरल स्टेटमेंट फॉर अ पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x. नेक्स्ट p ऑफ पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x. सपोज मैं आपको बोलूँ p ऑफ x की वैल्यू मतलब x स्क्वायर प्लस 8x की प्लस 9 की वैल्यू अगर वैल्यू 1 रही तो क्या होगी. सपोज यू हैव 3, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1. You have three values. You have to find out around these three numbers what value does the polynomial take. So you will write if x is equal to 1, then p of 1 will be 1. आप यहाँ पे x की जगह 1 लिखो तो यहाँ सब पे भी x की जगह 1 आएगा. 1 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 प्लस 9. 1 का स्क्वायर इज 1, 8 इंटू 1 इज 8 प्लस 9 which gives you 18. Next you have if x is equal to 2, you will have p of 2 is equals to 2 square plus 8 into 2 plus 9. 2 square is 4, 8 to the is 16 plus 9, 16 plus 4 20, 20 plus 9 29. Next we have p of minus 1. X is equal to minus 1. p of minus 1 is what? Minus 1 square plus 8 into minus 1 plus 9. Minus 1 square is plus 1, 8 into minus 1 minus 8 plus 9, 9 minus 8 1, 1 plus 1 2. So that's how you find out the value of polynomial. You just have to substitute the numerical value with the variable so that you get the correct value of the polynomial. Next we will move on to the practice set 3.4. Practice set 3.4 has 4 questions, so we will be solving all the 4 questions because they are easy and one of the questions is a bit tough. Not tough, variables ही है उसमें, numbers नहीं है, इसलिए solve करेंगे. For the first one you have for x is equal to 0, for x is equal to 0, find the value of polynomial. आपको polynomial जो दिया हुआ वो है x square minus 5x plus 5. You have to find the value of polynomial x square minus 5x plus 5 if value of x will be 0. First you name the polynomial. Let p of x is equal to x square minus 5x plus 5. कि आपने ये polynomial को नाम दे दिया. p polynomial with the variable x is equal to x square minus 5x plus 5. Next, for x is equal to 0, p of 0 will be what? 0 square minus 5 into 0 plus 5. This whole becomes 0, this becomes 0, 0 minus 0 plus 5 which is nothing but 5. Therefore, p of x is equal to 5. मतलब आपने x की जगह दोनों साइड 0 सब्सटीट्यूट किया तो आपका आंसर पाया. मतलब उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जब उसका वेरिएबल x का वैल्यू 0 होगा तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 5 होगा. Next you have p of y. p
P of y is equals to y square y square minus 3 root 2y plus 1, and you have to find out the value of P of 3 root 2. You are given the polynomial which is of variable y. You have to find out कि अगर आप y की जगह 3 root 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर क्या है. So let's solve this sum. Therefore, for y is equal to 3 root 2, P of 3 root 2 is equal to how much? 3 root 2 square minus 3 root 2 into 3 root 2 plus 1. आपने y स्क्वायर की जगह 3 root 2 स्क्वायर लिखा और 3 root 2 y की जगह 3 root 2 into 3 root 2 लिखा. Now if you see here 3 root 2 square, and here you have 3 root 2 into 3 root 2 which is indirectly 3 root 2 square plus 1. तो यहाँ पे plus 3 root 2 square है, यहाँ पे minus 3 root 2 square है. This both gets cancelled. You get the answer as 1. Therefore P of 3 root 2 will be equal to 1. Always remember, while solving the value of polynomials, you just have to substitute the value of variable and not change the coefficients. आप सिर्फ उस पर्टिकुलर x या उस पर्टिकुलर y की वैल्यू का वेरिएबल जो y का वैल्यू है वो चेंज करोगे और कुछ नहीं चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा. So take a good look at this one. If you have any doubts, ask us in the comment section or on the WhatsApp group. Or now we'll be airing on Telegram also. So you can ask us there too. So take a good look at this one. Next you have is the third sum. Third sum is a bit different because आपको इसमें दो values निकालनी है, and those two values will be of other variable which is not a numerical value. So let's start. You are given P of m is equal to 2y cube minus 6y square minus 5y plus 7. ये आपका original polynomial है. What you have to find out, P of a plus P of minus a will be what? आपको पहले P of a find out करना है, मतलब इस particular y की जगह पे एक polynomial में y की जगह पे आपको सिर्फ a लिखना है. दूसरी बार P of minus a निकालना है, इसमें y की जगह पे आपको minus a लिखना है, and then you have to solve the sum. Let's go. For P is equal to a, P of a will be what? Sorry, P of m is equals to, I'm sorry, question में थोड़ी गलती हो गई. P of m is equal to m cube plus 2m square minus m minus 10. Sorry, plus 10. So this is your perfect question. I'm sorry, extremely sorry. P of m is equal to m cube plus 2m square minus m plus 10. You have to find out P of a plus P of minus a will be what? दो बार वैल्यूज निकालनी है अलग अलग, उन दोनों वैल्यूज को ऐड करके बताना है कि वैल्यू क्या है. P of a is a cube plus 2a square minus a plus 10. For P is equal to, sorry, m, for m is equal to minus a, for m is equal to minus a, P of minus a will be equal to minus a the whole cube plus 2 into minus a the whole square minus of minus a plus 10. Minus of minus a because यहाँ पे minus m है, so m minus a रहेगा तो एक अंदर minus और ये बाहर वाला minus है. a square minus a the whole square, m की जगह minus a the whole cube. Now if you see, आप जब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर निकालते हो तो पॉजिटिव आता है, बट नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालते हो तो नेगेटिव ही आता है. You have minus a cube, this will become positive, so plus 2a square, minus into minus will become plus a plus 10. Now adding these two, P of a plus P of minus a. P of आप पूरा लिखोगे a cube plus 2a square minus a plus 10 plus into minus a cube plus 2a square plus a plus 10. Are you able to see it? Let me just make it bigger. So
plus 10 plus minus a cube plus 2a square plus a plus 10. So I hope अभी आपको दिख रहा होगा. Yes, it's visible. So आप अभी प्लस सब में मल्टीप्लाई कर दोगे a cube plus 2a square minus a plus 10 minus a cube plus 2a square plus a plus 10. आपका क्या हो रहा है? a cube और a cube कट minus a plus a कट. You get 2a square plus 2a square 4a square. 10 plus 10 gives you 20. So the answer will be p of a plus p of minus a is equal to 4a square plus 20. Take a good look at this one and then we'll move on to the last sum of the day. So the last sum for today, p of y is equal to 2y cube minus 6y square minus 5y plus 7. You have to find out the value of p of 2. What does it imply? आपको दिए गए पॉलिनॉमियल में से आपको y की जगह 2 रिप्लेस करना है और देखना है आपको पूरे पॉलिनॉमियल का वैल्यू क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. इफ y is equal to 2, therefore p of 2 is equal to what? 2 into 2 cube minus 6 into 2 square minus 5 into 2 plus 7. 2 cube, 2 2s are 4, 4 2s are 8. The outside 2, 2 into 8 is 16. 2 2s are 4, 6 4s are 24. 5 2s are 10 plus 7. 7 plus 6 13, which is 23. 16 plus 7 आपको 23 है. Next you have 24 minus 10 minus 34. You will get the answer is what? 4 minus 3 1, 3 minus 2 1. Answer will be minus 11. Why minus? Because 34 का साइन बड़ा है और 34 बड़ा नंबर है और उसका साइन माइनस में है. So you get the answer as minus 11. So आज के लेक्चर के लिए इतना ही. 4 sums are enough for you to explore more sums about the values of polynomials. And next lecture will be also in 2 parts because उसमें 2 concept है, रिमाइंडर थ्योरम है और फैक्टर थ्योरम है. Those are also based on the concept of value of polynomial. So try to analyze this, understand this, and then we'll move on to the next lecture. Till then, take care, stay home, stay safe.